अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अश्विनी जी ने और वीडियो का टाइटल है क्या दिल्ली क्या लाहौर, द टेल ऑफ टू सिटीज। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। इसके मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सुहेल हाशमी एंड इश्तियाक अहमद। ओके, काफी सारे लोग। Good evening, everyone. Welcome to Karwaan, the Heritage Exploration Initiative. I'm Ishan, and today we are here with a new conversation series, Karwaan Baithak, Sarhad ke is par us par, to commemorate, in a sense, the 75th anniversary of the independence of British India and also the partition of the same, which are the facets of the same coin, two different facets of the same coin. And for our first session, and we are collaborating with Sadaf Hussain, who is a wonderful chef who has promised us biryani after the series, and he's a wonderful podcaster and a writer. So thank you so much, Sadaf Bhai, for collaborating. Thank you. For our first session, we are going to talk about two very different but same cities at the same time, Lahore and Delhi, and the impact that partition had on both of them. And to talk about this, we have two wonderful speakers, Ishtiaq Ahmed Sahab and Sohail Hashmi Sahab, joining us from Sweden and Delhi respectively. Sohail Hashmi is a filmmaker, documentary filmmaker, a heritage activist. He doesn't like to be called as a historian, but he knows a lot of history than most of the historians now. So thank you so much, Sohail Sahab, for joining in. He's known for his heritage walks in Delhi that you can check on his on his Facebook page. Over to Sadaf Bhai to introduce our second speaker for the day. Thank you, Shan. I am excited, nervous, both at the same time. I feel like back to school, college, basically, not necessarily school as such. We have Professor Ishtiaq Ahmed, a Swedish political scientist and author of Pakistani descent. He holds a PhD in political science from Stockholm University. He is a professor of emeritus of political science at Stockholm University. He's also an honorary senior fellow of Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore. He was a visiting research professor at the Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, and at the South Asian Studies Program, National University of Singapore, from June 2007 to 2010. He is the editor-in-general of Liberal Arts and Social Science International Journal, which is also called LASIJ. He is a member of the Editorial Advisory Board of Asia Ethnicity, Journal of Punjab Studies, IPRI Journal Islamabad, and PIPS Research Journal of Conflict and Peace Studies Islamabad. So welcome to both of you, Hashmi Saab and Ishtiaq Saab. It's, as I said, privilege to meet both of you this way. Otherwise, kahan hi mulaqat hoti hai. And I am nervous, excited to learn about the twin cities that was once one, but now two. So yeah, over to both of you. Yeah, so the format, as for our audience who's listening to us, the format is that we'll have the opening remarks from our speakers, then we'll get into the conversation. And if you have any questions, you can send in the comments, and we'll see if our speakers can get back to your questions in the comments later. So Ishtiaq Saab, first, if you want to start, and then we'll go to Sohail Saab, and then we'll start the conversation. Thank you very much. This seems to be a very interesting occasion to discuss 75 years of the partition and what it did to Lahore and Delhi. I would begin with the Lahore story that I was born there on the 24th of February 1947, and my earliest memories of people discussing, around me at home was about the partition and some of the incidents which took place in our part of Lahore, which is known as Muzang, and our house was on Temple Road, Lahore. On the 12th of August, my mother
was just looking out from the window, and then she noticed that on her right, where there is a square, the local roughnecks, gundas, goons, they had gathered in large numbers. And she could sense that some trouble was on the way, because by that time Lahore was up in flames. From March 1947 onwards, communal riots consisting of stabbings, arson, incendiary, bombs being exploded were taking place. And the serenity and the tranquility of Lahore, before the partition riot started, Lahore was famous as a paragon of communal harmony. Although it was the hub of political activism, by and large, people had learned to live in peace with one another. But in March 1947, Lahore got caught up in the wave of communal riots which had started actually on the 16th of August 1946 in Calcutta, where several thousand people were killed in a few days. Then that contagion moved eastwards, and Hindus were killed in large numbers in Noakhali and Tripura. The same contagion then spread westwards, and several thousand Muslims were killed in Bihar. Hundreds of Muslims were killed in Bombay. And then in December 1946, in Haripur Hazara district of the northwest frontier province, now called Khyber Pakhtunkhwa, the Sikhs and Hindus were attacked mercilessly, and thousands were killed, and several thousand actually shifted to Rawalpindi city, which was the northernmost city of Punjab, to seek refuge. Then we have from the 24th of January 1947, the Muslim League calling direct action in Punjab to bring down the coalition government led by Sir Khizar Hayat Tiwana of the Punjab Unionist Party, supported by the Congress Party and the Sikh Panthik parties. The agitation had been launched because in the election, out of 175 seats for the whole of Punjab, the Muslims had 86 or 85 reserved seats, of which the Muslim League won 75, some say 73. The Congress won 50 seats, and the Sikh Panthik parties won 23. And then about 10 seats were for the scheduled castes, Punjabi Christians, and Anglo-Indians. So now the problem is who will form the government, because nobody had the majority of 87, 88 to form the government. First, the Muslim League, being the biggest party in the assembly, was invited to try to form the government, but they failed. Then the Congress and Sikhs went to Sir Khizar Tiwana and said, we'll support you as Chief Minister of Punjab. And so that is how a government had come into being in Punjab, which now the Muslim League wanted to bring down through the agitation. From 24th January till 26th of February, mass agitations were carried out by the Muslim League, and people were arrested in the thousands. Then finally, on the 26th, an agreement was reached
and uh, the detainees were released while the Muslim League called off the agitation. But something else had happened which was very significant. On the 24th of February, just a few days earlier, the British Prime Minister Attlee had declared that we will hand over power to Indians in a united or partitioned India by June 1948. Now, when that announcement was made and this agitation had taken place, the Chief Minister of Punjab, also called Prime Minister of Punjab, Sir Khizr Tiwana, realized that his role was over because his party, which previously used to rule Punjab, had been reduced to a mere seat or seats of 18 seats, and most had been taken away by the Muslim League. And he realized that in the future to determine the future of India, it will be the Muslim League and the National Congress who would be consulted, not his party anymore. So on the 2nd of March, he resigned. Then on the 3rd of March, Master Tara Singh comes out of the Punjab Assembly declaring Pakistan Murdabad, we will never let Pakistan come into being or Punjab come under the rule of Muslims. That very evening, Hindu and Sikh leaders met in Purani Anarkali, Lahore, and made very fierce speeches to the same effect. No Pakistan, no chances of Punjab being brought as a whole in Pakistan. On the 4th of March, then Hindu and Sikh students came out in large numbers in what is known as Gol Bagh, then now known as, I think, Ayub Park or something. Nasser Park, yeah. Nasser Park. In front of Government College, agitating that we don't want Pakistan, we don't want Punjab to come under partition in Pakistan. The police opened fire, and that's the story of Punjab going through, Lahore going through bloodshed, which spread to Amritsar, Multan, and Rawalpindi. Of course, we are talking about Lahore. So this grand calm which had prevailed for a long time in Lahore because of the Punjab Unionist Party, which was an intercommunal party led by Muslims but supported by Hindus and by Sikhs. Its era was over. Communalism had taken over. And in the 1940s, the percentage of demographic structure of Lahore was about 30% Hindus and Sikhs and 60% Muslims. If one just went to Lahore on a visit, people could be confused that this was predominantly a Hindu city largely, because most of the upscale localities, most of the businesses, most of the industries, most of the cinemas, most of the film studios were owned by Hindus. But if you went to the district of Punjab, Lahore, then many villages were predominantly Muslim. So this way, Lahore had a Muslim majority both in the city as well as in the district, but on appearance it looked like very much a Hindu cultural city with all major property owned by them. So the partition riots began, and once they started, they never really went away. And as the
weeks and months proceeded, the attacks or the conflicts became fiercer, more bloody, more armed. But the Hindus and Sikhs were on the losing side. And in June 1947, to be precise, the night of June 21, 22, Shalmi Gate locality, which was a Hindu Sikh majority locality in Punjab, was set ablaze. You know, in my book, The Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed, I have given the confession by one of the persons who was party to this setting of fire to Shalmi, Haji Abdur Rahman Gill. He was then only 17 years old. His father, Billa Jatt, was a famous Gunda. And the police and the magistrate, Muhammad Chima, Muhammad Ghani Chima, had sought his help to set fire to Shalmi Gate. And Billa had sent his son saying that he was a minor. So if they are caught, the police case against him would not be that strong. So the whole confession is there. But after that fire, the Hindus and the Sikhs realized they can't hold on to Lahore, and they fled in very large numbers. By the time the partition took place, only a few thousand Hindus and Sikhs were left in Lahore, who within days then almost went away altogether. I would say that what I'm telling you about Lahore would be true of the whole of what became West Punjab. Its 4.5 million Hindus and Sikhs were all gone, you know, across the border into East Punjab and beyond into Delhi. You know, the first paper I wrote on the partition thing was the result of my visit to Delhi in 1999. And as you said, it seemed that if I were only to close my eyes, I would be in another part of Lahore. You know, the buildings, the old town, the walled cities, they looked so very similar. And since I was staying at the Indian International Center, incidentally, there was a corner called the Lahore Corner, where people from Lahore, Pran Neville and Dr. Sobti, who was the, I think, medical advisor to the President of India, I think Mr. Kapoor, whose family owned the main textbook publishing house in Lahore, and so many other people used to sit there. And when they got to know that I had come to write about the Hindus and the Hindus and Sikhs of Lahore who fled to Delhi, they extended me full cooperation. And so the first paper, which later on is incorporated in my partition book, is based on those oral histories I collected. Let me say like this now. What happened to Lahore when all the Hindus and Sikhs left? Mostly it was Muslims from East Punjab, especially I would say Amritsar, but then also Jalandhar and Ludhiana, who came and occupied those places which had been vacated by the Hindus and Sikhs. Some people from Delhi and further on, Urdu speaking, did settle in Lahore, but most of them were directed towards Karachi. You know, the authorities saw to it that Urdu speaking people didn't settle in large numbers in Lahore. They went to Sindh and Karachi.
So, I mean, I don't know how many minutes I've used, but my initial remarks would be that whenever I go to India, and mostly I go to Delhi, one reason is I hope to meet people who are from Lahore and to speak Lahori Punjabi and feel at home. And when I go around Delhi, of course, Delhi is now much bigger. So many things have changed. So many new localities have come up. But the old walled city, the Jama Masjid, and some of those places are historical places where once there was a very large Muslim presence, which I'm sure Sohail Bhai will tell us about when he talks about what happened to Delhi. But what more can I add? I would say that this was a great tragedy for Lahore, because pre-partition Lahore had so many, places reminding us daily of the favors done by the departing Hindus and Sikhs. Let me name a few. Sir Gangaram, I would say, was the greatest philanthropist of Lahore and even of Punjab. Because of him, there are so many colleges, Sir Gangaram Hospital, the medical college, which is now university. Lahore College of Women was originally Land meant for societies. women, mostly women of all sorts. All this is Sir Gangaram. College. He developed Mall Road, Lahore, and so many other places. And he very liberally generated to charitable causes. Then you have equally the great services of Lala Bela Ram मेला राम चिड़ियाघर जिन्होंने दिया था. and his son Rai Bahadur Ram Saran Das. Rai Bahadur Ram Saran Das is the grandfather of Karan Thapar, this famous Indian TV personality. And then Sardar Dayal Singh established Dayal Singh College and the Dayal Singh Library and the Tribune newspaper, I think in 1888 or 1880. So all these things, whenever you go to Lahore, they remind you of a very strong presence of these non-Muslims, Hindus and Sikhs. The hospitals, I named Sir Gangaram Hospital. Lala Lajpat Rai built a hospital in the memory of his mother, and it's known as Gulab Devi Hospital, which is a 1,500 bed hospital, mainly taking care of chest infections. Then there is Janki Devi Hospital, a maternity hospital, which a Sikh doctor built in memory of his wife who died while delivering the baby. So, when you look at all this, and then you think about Krishan Chandra, the great story writer, he was from Lahore or lived his life in Lahore, earned his reputation as a great short story writer and novelist in Lahore, went to the same college as I did, FC College Lahore, and I communicated with him also when I came to Sweden. So you find this Lahore Delhi relationship only very politically, artificially broken. Culture-wise, history-wise, you look at the 1857 uprising and what happened to Delhi. On that account, people from the Punjab came and crushed the uprising. So there are
these stories you can also tell. But what I'm trying to say is that because Delhi was the capital of the Mughals, Agra and then Delhi, and Lahore was their, major province, even from Mughal rule, you find so many connections. Akbar was in Lahore for 13 years. He ruled from Lahore. And then Emperor Jahangir is buried in Lahore. Aurangzeb Alamgir built the Badshai Mosque, which until recently was the biggest mosque in the world. So this connection between Delhi and Lahore is also to be mentioned. I think I've almost taken the 25-30 minutes you allotted me, but we can come back to it later on if you would like me to respond to your questions. Thank you very much. भाई आज की इस वीडियो में जो है हमने इश्तियाक अहमद साहब जो है उनसे जो प्री पार्टीशन का जो लाहौर था उसकी जो एक कन्वर्सेशन सुन रहे थे। और ये हकीकत है कि लाहौर में जो है ना आपको जो लोग जो यहाँ से छोड़ कर चले गए, बेशक वो हिंदू थे या सिख थे, उनका एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है नज़र आता है। इवन के बहुत सारी जगहें अभी भी ऐसी हैं यानी कि नाम उनके वही हैं और क्या नाम लेते हैं वो जो है या जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, ठीक है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है या दयाल सिंह कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं जो कि हिंदुओं की तरफ से या जो है सिखों की तरफ से बनाई गई हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे जो एक आयरनी की बात बोलेंगे कि हमारे सामने सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद हमारी अकल पे ताले लगे हुए हैं कि यानी इस तरह से हम लोग को बना दिया गया कि हम सोच ही नहीं पाते उन चीज़ों के बारे में। इश्तियाक अहमद सर के बारे में बात करूँ तो मैंने इनकी 1-2 वीडियोस देखी इनके चैनल पर, बहुत अच्छे से टॉपिक्स जो हैं वो इलाबोरेट करते हैं और बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया लाहौर के बारे में, हिस्ट्री बताई एक स्पेसिफिकली लाहौर को लेकर, तो एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि अगर देखा जाए हमारे अगर हिस्ट्री की बुक्स में अभी मुझे लगता है कि अभी जो करिकुलम है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी कि लाहौर में किस किस तरीके से किन किन लोगों का योगदान रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि इतना दूर कर दिया गया उन सब चीज़ों से लोगों को, और एक ऐसी नफ़रत की फ़िज़ा जो है वो लोगों के बीच में फैला दी गई कि आज तक हम लोगों को एक नहीं कर पा रहे। स्पेशली पाकिस्तान के लोगों की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को इल्म ही नहीं है, इन लोगों को नॉलेज नहीं है, अपने कल्चर और अपनी रूट्स के बारे में पता ही नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये जो एक चेंज कर दिया गया, सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ मिटा दिया गया हमारे सामने। अगर देखा जाए जैसे मौजूद बोला सर गंगाराम हॉस्पिटल है, फिर गुलाब देवी हॉस्पिटल है। इनफैक्ट अगर हम सर गंगाराम के ही बस कंट्रीब्यूशन की बात करें लाहौर में तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, और अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, माल रोड की अगर हम लोग बात कर लें जो कि अभी भी लाहौर में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों को ना हमारी नई नस्ल को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जो एक टाइम गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब आकर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें बता सकते हैं। तो हमें मुझे लगता है कि अपना जो एक सर्कल है वो लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, हमें मजीद इसको बड़ा करना चाहिए। यार लाहौर शहर में अभी भी जो है ना बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि लाहौरियों के लिए जो है ना अनएक्सप्लोर्ड हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपने यंग जनरेशन की बात की तो आजकल की यंग जनरेशन जो वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है सोचती है, ठीक है, वो एक बहुत अलग तरीके की है। लेकिन जो है अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ का जो है शौक है। इवन के लाहौर में अगर आप जैसे टेंपल रोड है, ठीक है ना, मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई उसका नाम टेंपल रोड क्यों है, ठीक है। लाहौर में गुरु मांगत रोड है, ठीक है ना, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं कि भाई उसका नाम इस तरह क्यों है, ठीक है ना। मोहनी रोड है। फिर उसके बाद अगर बात करें लाहौर में सर गंगाराम जी जो हैं उनकी समाधि भी है, ठीक है ना, कृष्ण नगर है, ठीक है ना। फिर उसके इनके जो है सर गंगाराम जी की जो समाधि है मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि भाई वो है कहाँ पर लाहौर में। मुझे भी नहीं वैसे पता, नहीं मुझे पता है, हाँ मुझे पता कि कहाँ पर है, लेकिन ये मोहनी रोड वाली साइड पर ही आती है, यानी कि जो है
ना वो आज़ादी चौक उसके पास है। ओके। ठीक है, तो मेजोरिटी लोगों को जो है पता ही नहीं है कि भाई के क्या नाम लेते हैं कि लाहौर की एक हिस्ट्री क्या है। ठीक है, बस देख लिया ये पुराना लाहौर है, ये टकसाली है, ये शालमी है, ये रंगमहल है, बस ठीक है, यही जो है लाहौर, यानी कि उसकी हिस्ट्री इतनी रही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप जाते हैं, आपको जो है नाम लिखे हुए बकायदा बिल्डिंग्स पे मिलते हैं कि भाई ये फलाने बंदे की जो है वो बिल्डिंग थी। ठीक है, जैसे अगर मेरा ख्याल है कि इधर जाए ना म्यू हॉस्पिटल, ठीक है ना, उसके सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर मोहन निवास जो है वो बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग पे भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको जो है स्वास्तिक बना हुआ मिलेगा। लेकिन चीज़ ये कि लोग जो है सोचते नहीं है कि यार आखिर यहाँ पे कौन रहता था। ठीक है ना, वो यहाँ से क्यों छोड़ के गया, ऐसी क्या जो है यानी कि वो सिचुएशन पैदा कर दी गई थी कि लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। देखो मौसम, एक चीज़ होती है कि बहुत देखो, अगर अब हम कहेंगे यहाँ पर हमें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता और लोग क्यों नहीं समझते, क्योंकि जो मुगल टाइम पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताया गया यहाँ पर। अगर आप मुगल एरा के जो चीज़ें हैं, जगह हैं, उनको देखो, और जो जब आप इवन के जो टूर गाइड हैं वो आपको जब गाइड भी करेंगे ना, वो बहुत ऐसे बात करेंगे लाइक जैसे ये उनकी हिस्ट्री है। ठीक है ना, तो जब आप लोगों का दिमाग इस तरह से बना देते हो ना, और साथ में ये कहोगे लोगों का जो माइंडसेट है वो इस तरह का बनाओगे कि हिंदुओं ने हम पर जुल्म किया या वो हमें अच्छा नहीं समझते थे, तो पूरी की पूरी जो एक नस्ल है ना वो चेंज हो गई है उसी एक प्रोपोगेंडा की वजह से। तो मुझे ये लगता है ना अब के टाइम में हमारे लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि हम लोग जब भी कोई डांस वगैरह या कोई हमारी शादी होती है या हमारे ड्रेसिंग में हम कोई मुगल एरा के कपड़े नहीं पहन रहे होते या मुगल कल्चर के कपड़े नहीं पहन रहे होते, हम लोग इंडियन कपड़े पहन रहे होते हैं। और पता है, मैं अभी आज ये वीडियो देखते देखते जब ब्रिटिशर्स की बात हुई बीच में, तो मुझे एक चीज मेरे जहन में आज पहली दफा आई कि ब्रिटिशर्स ने जब कब्जा किया था तो तब उन्होंने यूनाइटेड हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। ठीक है ना, तो जाते हुए भी ना उनकी ये ही जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक ही देकर जाते, वो उसका बंटवारा ना करके जाते, क्योंकि जब उनको मिला था तब वो बटा हुआ नहीं था, लेकिन उनके जाते जाते तक वो बढ़ चुका था। तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना उनकी भी मुझे यहाँ पर ये एक मैं कहूँगी कि मुनाफिका दोगलापन लगता है। फिर बाकी आगे भी लोगों का है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों में भी वो चीज आई गई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैं ये बात करी थी मौसम के साथ, मौसम से बात कर रहा था कि लोग ऐसे क्यों हैं, लोग क्यों नहीं समझते हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन है और मतलब इतने परसेंट इन्फ्लेशन है, इतनी परसेंट हम लोगों ने खुद बना दी हुई है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो मैं इसको ये बात बोल रही थी कि ब्रिटिश टाइम में जिस तरीके से उन लोगों की एक प्लानिंग थी ना कि लोगों को उनका कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो कुछ सोच समझ ही ना पाए कि हम कुछ कर सकते हैं। सेम वही चीज़ हमारे साथ यहाँ पर की हमारे जो हुक्मरान हैं उन लोगों ने, कि हमें इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कुछ ऐसी चीज़ों में बेसिक ज़रूरतें पूरी करने में हमें इन्वॉल्व कर दिया कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसके अगेंस्ट मिलकर बात करें और अपने मुल्क को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। अच्छा, मैं अब जो है बात करना चाहूँगा थोड़ा नहीं, उससे पहले जहाँ पे आपने मुगल्स की बात की ना यार, सबसे पहले तो क्या नाम लेते हैं, अगर अब आकर देखना है तो अब आकर जरा लोग जो है ना वो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानना शुरू हो गए हैं। पहले की अगर बात की जाए तो पहले जो है जब हम अपने बचपन की बात, जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था होता, लोगों को हिस्ट्री के बारे में इतना पता ही नहीं था होता। और मोस्टली लोग जो है ना, जो हमें सोशल स्टडी की बुक्स जो पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, मेजोरिटी जो मैं जानता हूँ, जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, मेजोरिटी बच्चे जो है ना वो सर दर्द समझकर उसे पढ़ते थे। ठीक है ना, और उन बुक्स में अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ आपको जो है एक दो अफगान रूलर्स के बारे में पढ़ाया जाता था और या मुगल्स के बारे में जो है पढ़ा दिया जाता था। उससे पहले भी थे कायदे आज़म के बड़े, वो बाद की बात है। ठीक है ना, मैं पहले याद भी नहीं है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, उससे पहले की
की हिस्ट्री जो है वो नहीं बनाई जाती थी, यानी कि कह लें कि जो सोशल स्टडी की बुक पढ़ाई जाती थी उसमें जो है ना दुनिया की शुरुआत वो मुगलों से जो है वो हुई होती है, ठीक है ना, एक वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आकर बात करें ना, तो जैसे हमने जो है वो जो टूरिज्म जो बस है जो लाहौर की, उस पर हमने सफ़र किया, तो जब शाही किले के पास आए या रास्ते में जितनी बिल्डिंग्स आई उन्होंने वो सारा कुछ बताया कि फलानी बिल्डिंग फलाने ने बनवाई, फलाने ने बनवाई, जो लाहौर का किला है इसकी बुनियाद जो है लॉर्ड राम के जो बेटे लव थे उन्होंने रखी, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है ना। मसला क्यों नहीं होती, ये बताने में और पढ़ाने में फर्क आता है ना यार। मसला जो है ना बेसिकली टेक्स्ट बुक्स में है, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा भी है कि आप देखेंगे कितने लोगों को जो है ना वो हिस्ट्री जानने का शौक है। लिटरली मैंने एक चीज जो देखी है लोगों में, भाई उन्हें तरीके याद रखने में बहुत ज्यादा मसला रहता है, मैं भी ठीक है ना। मसला रहता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हिस्ट्री में जो है इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है हम जिस टाइम में जी रहे ना, अब जैसे चल रहा है चलने दो। बात ये नहीं है मौसम, बात मेरा कहने का मकसद ये कि जैसे तुम कह रहे हो ना टेक्स्ट बुक्स में है, मुझे नहीं लगता कि करिकुलम में कभी हम लोगों ने ये बचपन में पढ़ा भी हो कि जो शाही किला है उसकी हिस्ट्री में कभी जो लव है उनका नाम जो है लिया गया। मैंने वैसे अगर अपनी टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो मैंने टेक्स्ट बुक में कभी शाही किले के बारे में भी जो है वो नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़ाया नहीं गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब नहीं आप समझ रही कि लोग जो हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आपने ठीक है एक टाइम तक पढ़ा, लेकिन उसके बाद आपने जो एक लिमिटेड सा या डिस्टॉर्टेड सा जो आपने जो है टेस्ट पढ़ लिया वो भी सिर्फ इस वजह से क्या रट्टा मारेंगे, जाके पेपर पे जो है एज इट इज लिखाएंगे, पास हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जब आप मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद कितने लोग जो हैं वो हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, बहुत कम होती है जो लोग जो है हिस्ट्री को पढ़ते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं या बुक्स बाजार से जाकर खरीदते हैं जो डिफरेंट राइटर्स ने लिखी होती हैं, जो लोकल और इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं, बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, पहले लोगों में ये चीज़ फिर भी आपको मिलती थी, उनके घर में पूरे कैबिनेट्स बने होते थे जिसमें उनको बुक्स नजर आती थी, अब ऐसा नहीं है। फिर ब्रिटिश टाइम की बात करें, मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर दूं क्योंकि फिर आप आगे से कंटिन्यू करना। एक्चुअली देखो तुमने खुद ही इस बात का जवाब दिया, बिल्कुल बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट किसने पैदा करवाना है, वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टीचर्स बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर ये एक एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। तुमने कहा कि पहले जमाने के लोगों के घरों में तुम्हें बुक शेल्फ नजर आती थी, एक कलेक्शन नजर आती थी, अब क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वो रिश्ता तोड़वा दिया गया है, वो इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। क्योंकि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो जब हम लोगों ने डेट्स नहीं भी याद करवानी ना, हमने सिर्फ अगर पर्सनालिटी के नाम और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो याद करवाने हैं, तो हम उस पे क्या करते हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली हम उनसे बात करते हैं, हम कोई ना कोई स्टोरी बनाकर उनको छोटे छोटे बच्चों को रिमाइंड, जब आप छोटे बच्चों से ही एक वो चीज उनके अंदर डाल दोगे ना, वो बड़े होने तक उनका इंटरेस्ट खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा, उनको पता होगा उन चीजों के बारे में। अब ये आपने बात की है ना, इसमें भी हमारे घर में से जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बनती है, ठीक है ना। हम जैसे ही बच्चों को स्कूल में डालते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों हमारी सबसे बड़ी हाय इतनी ज़्यादा किताबें, बच्चा इतनी किताबें पढ़ेगा, ठीक है ना। यार देखें आपने वो कहा ना, घर से आपको जो है ना एक जो चीज़ होती है, जो आदत होती है, वो बचपन से ही डालनी पड़ती है हर इंसान को, हर चीज़ को। एक लेवल की बात कर रहे हो, ठीक है, जो कि ये एक अलग डिबेट है कि इतनी सारी बुक्स, मुझे लगता है जब कल्चर आप बनाते हो ना, वो एनवायरनमेंट बनाते हो और आपको उसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू का पता है। अगर आप देखो जितने भी हिंदू और सिख लोग थे, उनको पता था कि भाई पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने अपनी पर्सनल चीजें जो हैं वो दान कर दी, सिर्फ इसलिए कॉलेज बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, या जिस तरीके से एक मॉडर्न चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। क्या हम लोगों ने या हमारी कम्युनिटी ने इतना कंट्रीब्यूट किया, या हम लोग उस चीज पर फोकस कर लेते हैं कि भाई ये इतना हम लोगों को शुरू से बता दिया गया, हमारी एज ए इंडिविजुअल क्या एक कंट्रीब्यूशन रही? मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों को जब सिखाना शुरू करते हो ना, शुरू से बच्चे उस चीज को सीखते हैं।
क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है जब बच्चा हर चीज सीख रहा होता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक ब्लैंक होता है ना उसका एक माइंड, के आप उसको सिखाएं चीजें, तो आप जैसा उसको सिखाते जाएंगे बनाते जाएंगे वो बनता जाएगा। तो आपने अब ये बात की ना, अब देखेंगे क्या नाम लेते हैं, जो बच्चे हैं उन्हें जो पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है ना, उनका जो है एक पढ़ाने का तरीकेकार क्या है। अगर मैं लोकल स्कूल की बात करूं, ठीक है ना, लोकल स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं पास जो टीचर होती है वो पढ़ाने जा रही होती है। एक बंदा जो खुद बहुत ज़्यादा अच्छा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे से जनरेशंस को जो है वो बहुत अच्छी जो है एक एजुकेशन देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम जो है एलीट स्कूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एक स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना, उनका तो एक भाई पूरी जिंदगी का जो एक फंडा होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर इस बात का भी जवाब देती हूँ। देखो वही बात मैटर करती है कि आप किस तरह का इन्वायरमेंट देते हो। अभी हमारे एक मिलने वाले थे, सारे उनको खालू जी बोला करते थे, ठीक है। अब वो पुराने टाइम की मैट्रिक उन्होंने की हुई थी, ठीक है, लेकिन वो मतलब जो नए बच्चे थे जो कि मतलब आप कह लो कि कुछ अरसे पहले के, उनको वो मैथ्स भी करवा लेते थे, उनको वो इंग्लिश भी पढ़ा लिया करते थे। किस तरह से, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ये मैं ये मानती हूँ कि आप पढ़ाने वाले का ये बहुत असर होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए सिस्टम क्या है या पीछे से किस तरीके से वो लोग पढ़े हुए हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो हमारा क्या है कि शुरू से ही वो चीज जो है ना वो खत्म करके ऐसे लोग प्लांट कर दिए गए जो हमें असल वाली हिस्ट्री तो बताते नहीं है, हमारे असल हीरोज के बारे में बताते नहीं है। तो मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी बेसिकली उसी चीज के बारे में जो है ना कह रहा हूँ कि देखें, अब जैसे आपने खालू जी की जो है एग्जांपल दी, ठीक है ना, उन्होंने भी एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए, ठीक है ना, उसके अलावा जो है उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन हिस्ट्री की अगर बात कीजिए ना, हिस्ट्री इंसानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंसान अपने इंटरेस्ट से पढ़ता है, वो आप किसी पे थोप नहीं सकते, ठीक है ना। और हिस्ट्री जो है ना उन सब्जेक्ट्स में से एक है कि भाई आप जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा ना वो उसे ज़रूर पढ़ेगा। बेशक वो आज के टाइम में बेशक वो ऑनलाइन किताबें डाउनलोड करके पढ़े, बेशक उसे मार्केट से जाके बुक्स मिले, वो ज़रूर पढ़ेगा। बेशक आप उसे जिस तरह की मर्जी हिस्ट्री पढ़ा दें उसके अर्ली फेज में। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी होती हैं जो आपके अंदर नेचुरली आती हैं। अब लाज़िमत है स्कूल में आपने भी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है ना। आपने स्कूल लाइफ के बाद कितनी हिस्ट्री की किताबें जाके मार्केट से खरीद ली या पढ़ ली हैं? मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही, अगेन फिर तुम मेरा ना पॉइंट समझ ही नहीं पा रहे। मैं ये कह रही हूँ कि वाकई में तुम सही कह रहे हो, एक चीज के लोगों में नेचुरली होता है कि कुछ जब जैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता, सब्जेक्ट पसंद होना ना होना एक बात है, लेकिन अगर आप शुरू से मोटे मोटे नाम जो हैं जो वाकई में आपके हीरोज और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिना तारीख के मतलब डेट्स नहीं आपने याद रखनी, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, तो आप अगर उनको नाम बता दो एटलीस्ट बच्चों को वो नाम याद रहते हैं। क्या आज बच्चों को मतलब बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता? बिल्कुल पता है। मैं ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रही कि आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए उसमें, मैं ये बात कर रही हूँ वो आपके एक अलग मैटर। बट आई थिंक जब टीचर्स बात करते कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में वो चीज रह जाती कि हाँ हमारे टीचर ने ये कभी किसी ने ये डिस्कशन में हम लोगों को बताया था, बोला था। मेरा सिर्फ यहाँ तक का मुद्दा है। ओके सो बाकी और मौजम कोई बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग तो हिस्ट्री के मामलात में काफी ज्यादा खो गए थे। बट ये कि हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है और मेरा ओपिनियन तो यही है अभी भी कि भाई बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे चूज क्या करना है उन्होंने वो उनकी अपनी एक मर्जी है। क्योंकि अभी अगर मुझे पता है अच्छे से आज के बच्चों को अगर हम लोग बताएंगे ना बाहर जाकर कि भाई ये सर गंगाराम हॉस्पिटल, अगर उनको हम सर गंगाराम के बारे में भी पूछेंगे तो शायद कुछ बच्चों को पता हो, मेजॉरिटी को तो मुझे लगता है कि पता ही नहीं होगा उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा इन्वायरमेंट पैदा करते हो। एनीवे गाइज, ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और इसी के साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।